And very good evening. I hope you all are good. So today in the class we are going to revise alternating current topic through question. But first I will take you through basic things that we need to know in alternating current. ठीक है? तो चलो एक चीज है, हमने ऑल्टरनेटिंग करंट में बहुत सारे सर्किट पढ़े थे, बट ऑल सर्किट्स कैन बी रिवाइज थ्रू अ सिंगल सर्किट, जो कि है तुम्हारा एलसीआर सर्किट. सो बेसिक चीज जो हमें जानना है ना, वो ये है. देखो, अगर एलसीआर सर्किट मींस उसके पास इंडक्टर होगा, उसके पास कैपेसिटर होगा, और उसके पास क्या होगा, रजिस्टर होगा, राइट. एंड दिस थ्री थिंग्स आर इन सीरीज कनेक्टेड टू अ बैटरी विच इज एसी बैटरी. डन है. एंड वोल्टेज को हमेशा ही हमने एक लिखा था वी नॉट साइन समथिंग, राइट. सो लेट्स से वोल्टेज इज वी नॉट साइन ओमेगा टी. इन दैट केस लेट्स से करंट फ्लोइंग थ्रू, और इन दिस सर्किट करंट को हम क्या लिखने वाले हैं, सम आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव. सो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, अगर हमें वोल्टेज दिया हुआ है, एल का वैल्यू दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, और हमसे पूछता है आई नॉट क्या होगा, करंट और वोल्टेज के बीच का फेज डिफरेंस क्या होगा, दैट इज फाइव. सो ये सारी चीजें कैसे निकालते हैं, डन है. सो इस सर्किट का सबसे पहले देखो, कोई भी हम सर्किट जब पढ़ते हैं और उस सर्किट का करंट निकालना होता है, तो सर्किट का नेट रेजिस्टेंस निकालते हैं, जो कि इस केस में हम इम्पिडेंस बुलाते हैं. इम्पिडेंस जेड को हम कैसे लिखते हैं, दैट इज योर एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर प्लस आर का होल स्क्वायर, यही था ना. सो दिस इज दिस. So maximum current will be equal to how much? That is I naught. That is maximum voltage by Z. So this is the maximum current. So I naught हमें मिल गया, यहाँ से phi निकालना है. So जब भी तुम्हें phi निकालना हो, सिंपल है, एक डायग्राम बना लो ऐसे. So this is your XC minus XL का लाइन. This is your XC minus XL का लाइन and this is R का लाइन. ठीक है. So here जो करंट है तुम्हारा, दिस करंट आई विल बी इन फेज विथ रेजिस्टेंस आर, है ना. कैपेसिटर के साथ वो क्या होगा, वो लैग करेगा 90 डिग्री से. सॉरी, कैपेसिटर के थ्रू करंट जो होगा वो लीड करेगा वोल्टेज से बाय 90 डिग्री, एंड थ्रू इंडक्टर इट विल लैग बाय 90 डिग्री. देन सो हियर करंट को अगर हमने लिया, लेट्स से हियर दिस इज द, इफ दिस इज द लाइन ऑफ वोल्टेज, डन है, रेजिस्टेंस के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो इस वोल्टेज से क्या होगा, फेज में होगा, राइट. सो लेट्स से हियर करंट इज दिस, डन है. एंड वोल्टेज का लाइन हमने ये लिया है. तो वोल्टेज और करंट के बीच का जो एंगल है, लेट्स से दैट इज फाइव. ठीक है, डिटेल में नहीं जाते यार, क्योंकि दैट मच टाइम इज नॉट देयर. सो यहाँ पे मैंने करंट और वोल्टेज के बीच के फेज को क्या रखा, फाइव. अब देखो, फाइव अगर निकालना है तो फाइव निकालने के लिए सिंपल हमें क्या करना होगा, हमें बस ये वाला चीज याद रखना है, दिस इज एक्सी माइनस एक्सएल एंड दिस इज आर. एंड इन दैट केस फाइव इज योर व्हाट, फाइव इज योर दिस. ओके, दिस इज द फाई. सो फाई निकालने का तरीका क्या होगा, यहाँ से देख लो, ये लाइन भी एक्सी माइनस एक्सएल होगा. सो बेसिकली tan फाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, एक्सी माइनस एक्सएल बाई आर. ठीक है. सो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट फाई, एंड आई नॉट भी हमारा निकल गया. अब यहाँ से देखो, अगर अगर सर्किट में सी और एल दोनों ही जीरो हैं, इफ सी एंड एल बोथ आर जीरो, तो उस केस में हमारा क्या होगा, यहाँ पे आई नॉट का वैल्यू वी नॉट बाय आर होगा. और फाई का वैल्यू क्या होगा, अगर सी और एल दोनों ही जीरो है तो tan फाई जीरो, यानी कि फाई जीरो. करंट और वोल्टेज दोनों क्या है, फेज में है. ठीक है. सो वन थिंग इज दैट. और वैसे सर्किट को हम क्या बोलते हैं, प्योरली रेजिस्टिव. अगर तुम देख लो, अगर एल जीरो है और आर जीरो है, सिर्फ सी इज देयर, अगर सिर्फ सी है तो यहाँ पे आई नॉट का वैल्यू क्या हो जाएगा, वी नॉट बाई एक्सी. डन है. और फाई का वैल्यू क्या होगा, अगर फाई निकालते हो, आर जीरो है, सो इफ आर इज जीरो तो फाई विल बिकम 90 डिग्री. और यहाँ पे फाई का वैल्यू हमें क्या दिख रहा है, दिस इज योर पॉजिटिव, राइट. क्योंकि हमारा यहाँ पे एक्सएल जीरो है, सो एक्सी बाई जीरो दैट इज प्लस इन्फिनिटी, राइट. सो फाइव इज 90 डिग्री, करंट इज अहेड ऑफ वोल्टेज बाई 90 डिग्री. डन है. सो क्वेश्चन ऐसे हो सकता है कि हमारा जो एलसीआर सर्किट है वो कैपेसिटिव इन नेचर है या इंडक्टिव इन नेचर है. कैपेसिटिव इन नेचर मीन्स करंट वोल्टेज से लीड करेगा, इंडक्टिव इन नेचर मीन्स करंट वोल्टेज से लैग करेगा. डन है. और प्योरली रेजिस्टिव इन नेचर मीन्स करंट और वोल्टेज का फेज सेम होगा, यानी कि फाइव जीरो होगा.
ठीक है. सो इफ यू लुक एट दिस थिंग्स केयरफुली, तो यहाँ पे देखो, हम कोई भी सर्किट दिया हो, सर्किट में सिर्फ एल हो या सी हो या आर हो या तीनों का कॉम्बिनेशन हो, वी कैन कैलकुलेट करंट बाय दिस एंड वी कैन कैलकुलेट फाई बाय दिस ट्रायंगल. ठीक है. सो एवरीथिंग वी कैन डू. Now, what is the power dissipated in that LCR circuit? So, power का हमने फॉर्मूला लिखा था I RMS V RMS cos phi. और I RMS क्या था? इन जनरल अगर हमारा करंट I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई के टर्म में है, वोल्टेज V नॉट साइन ओमेगा टी के टर्म में है, तो I RMS क्या था? I नॉट बाई रूट टू. V RMS क्या था? V नॉट बाई रूट टू. एंड cos phi, अगेन cos phi आप कैसे निकालोगे? सो अगेन सेम ट्राइंगल में आप चले जाना. This is your xc minus xl, this is r, and this is phi. So this value is r square plus xc minus xl का square. ठीक है. So cos phi will be equal to how much? Cos phi अगर निकालना है तो r by r square plus xc minus xl का whole square. That is z, right? So that is how we can calculate power, and this cos phi is called power factor. इसको हम क्या बुलाते हैं? Power factor बुलाते हैं. ठीक है. सो दिस इज दिस. और एक इंपॉर्टेंट चीज जो हमें याद रखना है वो है वॉटलेस करंट. सो वॉटलेस करंट क्या होता है? तो अभी अभी जो मैंने डायग्राम बनाया था, हमारा वोल्टेज सपोज इधर था, दिस इज वी नॉट साइन ओमेगा टी, एंड करंट इज समवेयर हियर विच इज आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव. सो यू कैन क्लियरली सी हियर वन थिंग, और वो क्या देख पा रहे हो कि करंट और वोल्टेज के बीच का जो फेज है दैट इज फाइव. सो दिस एंगल इज फाइव. Now, whatever value of current is along the voltage, that is called wattful current. उसकी वजह से पावर होगा. And whatever is perpendicular, current का component जो perpendicular है, I mean current का एक component इधर होगा और current का एक component इधर होगा. So जो parallel to the voltage है उसकी वजह से पावर मिलेगा, and which is perpendicular to the voltage उसकी वजह से कोई पावर नहीं मिलेगा. And this portion of current is called wattless current. ठीक है, याद रख. Now let's do the question. This is the first question. All questions are from 2024 and 23 JEE Mains. So you can take 1 minute, do solve the question and let me know what answers you are getting. Okay? Yes, this is your time. Do it and then let me know. Okay, so let's solve it together then. When a coil is connected across 20-volt DC supply, it draws a current of 5 amps. Then, when it is connected across 20-volt 50 hertz AC supply, draws a current of 4 ampere, the self-inductance of the coil. So, we are having a coil. ठीक है. क्लास में क्वेश्चन किए होंगे या फिर तुम लोगों ने खुद से भी किया होगा कि जो कॉइल होता है ना, उसका कुछ रेजिस्टेंस भी होता है और इंडक्टेंस तो होगा. सो लेट्स से इसका रेजिस्टेंस आर है, इंडक्टेंस एल. सो इन फर्स्ट केस व्हाट वी आर डूइंग, वी आर एक काम करती हूँ, मैं यहाँ पे कॉइल को कैसे दिखा सकती हूँ? इसको दिखा सकती हूँ कि इसके पास कुछ रेजिस्टेंस है और इंडक्टेंस है. सो कॉइल को आर और एल दोनों के टर्म में दिखा सकते हैं, राइट? सो ऐसे मैंने लिखा. अब देखो, ऐसे ही मैं कनेक्ट कर रही हूँ फर्स्ट केस में डीसी के साथ. सो अगर डीसी करंट, डीसी वोल्टेज के साथ अगर कनेक्ट किए हो, तो ये तो आर है. एक्सएल का वैल्यू क्या होता है? ओमेगा एल. एंड डीसी मीन्स ओमेगा इज व्हाट? 0. डन है. सो इन केस ऑफ डीसी एक्सएल का वैल्यू क्या है? 0. सो करंट इन द सर्किट विल बी इक्वल टू हाउ मच? दिस इज 20 वोल्ट. सो करंट इन द सर्किट इज
20 by R, because XL is 0, only R is there, and this value is equal to 5 ampere. It means R is equal to how much? 4 ohm. So we have got R, right? Now let's focus on second thing that is given over here. So in the second case, it is saying when we are connecting it to AC source. तो चलो अब AC source से connect करते हैं. नाउ अगेन सेम थिंग, ऐसा है, और इसको हमने किससे कनेक्ट कर दिया? एसी सोर्स से. ये तो आर आर ही रहेगा 4 ओम. एंड दिस इज एक्सएल. एक्सएल का वैल्यू आप क्या लिखोगे? ओमेगा एल. नाउ इन द क्वेश्चन करंट वैल्यू गिवन इज 4 एम्पियर. So we have to calculate self inductance. Now let's solve it. So current का वैल्यू अभी क्या लिखोगे? अभी लिखोगे आई मीन मैक्सिमम करंट से ही सॉल्व करते हैं, बिकॉज it is not talking anything about time. So let's say 20 volt 50 hertz दिया हुआ है ना. So 20 volt we need to take. And what is the impedance? Impedance of the circuit हम कैसे लिखते हैं? यहाँ पे XL है तो XL का स्क्वायर, क्योंकि लिखते हैं XC माइनस XL का स्क्वायर. XC is 0 over here. So XL का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर, that is 60. So this is the impedance. Current will be this impedance. And this value is equal to how much? 4 ampere. Now let's do the squaring on both sides. If we are going to do that, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? 400 is equal to 16 का XL square plus 16 into 16. That is your 256. And 400 minus 256 करोगे 144 आएगा. And this is 16 XL square. So XL is equal to how much? 12 by 4. So this is equal to 3. But we have to calculate self inductance, that is L. So XL किसके बराबर होता है? ओमेगा L. ओमेगा L is equal to 3. Omega is how much? Here F का value given is 50 hertz. So we already know one thing, and that one thing is what? If you see here carefully, omega is equal to क्या होता है? 2 pi F. So here 2 pi into F, that is 50, into L is equal to how much? 3. And pi is given equal to 3, right? So pi will get cancelled with 3. L का value कितना आ रहा है? 1 by 100. So 1 by 100 means what? 10 millihenry. So correct answer will be your what? 10 millihenry. ठीक है? Now, okay, so correct answer is your 10. Now let's do this question. Okay, take your time. I'm launching the poll over here. Take your time, do it. Yes? Anyone? Okay, still you are having time, do it. Okay, now let's do the question together. So what is given? For a given series LCR circuit, it is found that maximum current is drawn when value of variable capacitance is this much. So there is LCR circuit. This is L, this is C, this is R. Done है? This is connected to AC source. So current, maximum current when we will get. I mean I naught का value मैंने कितना लिखा था? अभी अभी बताया. V naught by Z. Z was how much? XC minus XL का whole square. डन है प्लस आर का स्क्वायर. सो व्हेन दिस आई नॉट विल बी मैक्सिमम, वी नॉट इज फिक्स, राइट? हाउ वी कैन मैक्सिमाइज आई नॉट? सो फॉर दैट वी विल ट्राई टू मिनिमाइज जेड. एंड जेड इज मिनिमम व्हेन आर यू कैन नॉट मेक टू जीरो, बिकॉज एलसीआर सर्किट है, तीनों चीजें प्रेजेंट होंगी.
So we can do one thing, we can manage in the values of XC and XL such that XC is equal to XL. तो ये वाला term हो जाएगा 0 and then current will become maximum. So this is the case. If resistance of 200 ohm and 100 millihenry inductor is being used in the given circuit, frequency of AC source is what? So we just need to do this. XC is equal to XL. XC is how much? 1 by omega C. XL is how much? Omega L. So just equate these two. So omega is equal to 1 by root under LC. And this is equal to how much? L value is given as 100 millihenry. So 10 to the power minus 1 Henry. And how much is C? 2.5 into 2.5, that is 25 into 10 to the power minus 10 farad, right? That is nanofarad here. So 2.5 को मैंने convert कर दिया. I mean 0.5 वाला जो 10 है उसको भी ले लिया. So this is this, right? This is the value of omega. But we have to calculate frequency. और हमारा frequency का formula क्या होता है? Omega और frequency कैसे related है? Omega is equal to 2 pi f. So if we have to calculate frequency, we need to do omega by 2 pi. So this is omega divided by 2 pi. So this is 2 pi root under 10 to the power minus 1 or minus 11 बोलो into 25. So let's take pi inside क्योंकि हमें pi square को 10 लेना है. So let's take pi inside. If I'm taking that inside, pi square it will become done है into 25 into 10 to the power minus 11. So basically this is 10. This will become 10 to the power minus 10. Done it? And when you are going to take the root, if you're going to take, then 2 into 5, that is 1 by 10 into 10 to the power minus 5. So this is equal to how much? 10 to the power minus 4. So this is going to be 1 by 10 to the power minus 4, that is 10 to the power 4. So that is 10 into 10 to the power 3 hertz. So correct answer here will be also what? 10. Okay? Okay. Now let's move on to the next question. This is your next question. Take your time, do it. I'm again launching the poll. Okay. Okay, the question is very easy actually. You just need to put in the formula, right? So there's so many questions, around 6 or 7 coming in JEE Mains directly from the formula. If you remember formula, it's solved, it's done. You have already got 4 marks for each question. I mean, on the average, if 6 is coming directly from the formula, then you're getting 24 marks. So remembering formula is also very much important. If you know the concept, formula will be with you. I mean, there is no, need of extra effort in remembering things. So in series LCR circuit, capacitance is changed from this to this to keep the resonance frequency. What is this resonance frequency? This is the frequency at which current is maximum in LCR circuit. So that frequency, just now in the previous question we have seen that angular frequency is equal to 1 by root under LC. F निकालना है तो ये कितना होगा 1 by 2 pi root under LC. So here what is said, when you are changing C to 4C and you have to keep resonance frequency unchanged, new inductance should be what? I mean, initially omega naught, initial frequency, angular, is equal to how much? L naught C naught. Finally, what you are doing, you are changing C to 4C. I mean, final frequency. And again, you don't have to change the frequency. कह रहा है कि frequency को unchanged रखना है. तो इसको भी omega naught ही रखना है. And this is C naught has become how much? 4 C naught. So to keep this thing constant, what we should do, we should write L naught by 4. Then again, it will become L naught C naught, right? So new inductor will have inductance equal to L naught by 4. Initially, it was how much? L naught. So L naught से L naught by 4 में change हुआ. Done it? So घटा. कितने से घटा? If you have to calculate the change in inductance, so that is your 3 L naught by 4.
सो करेक्ट आंसर इज व्हाट, रिड्यूस्ड बाय दिस. अगेन कुछ लोगों का आंसर L0/4 आएगा, डायरेक्टली ये टिक कर देंगे. इफ यू आर डूइंग दिस, यू आर डूइंग अ मिस्टेक, क्योंकि स्टेटमेंट को भी ध्यान से पढ़ना होता है. रिड्यूस्ड बाय, सो इट इज गेटिंग रिड्यूस्ड बाय. रिड्यूस्ड टू नहीं है, रिड्यूस्ड बाय. सो कितने अमाउंट से घटा, सो दैट यू हैव टू आंसर. सो करेक्ट आंसर विल बी सी. नाउ डू दिस करंट सॉरी क्वेश्चन. Okay, again I have launched the poll. You can write in there. Again, this is also directly coming from the formula. If you have forgotten, I mean just now I revised the formula also, but अगर भूल रहे हो तो मैं लिख देती हूँ. पावर को क्या लिखते हैं हम? VRMS, IRMS, cos phi, where phi is what? Phase difference between voltage and current. ठीक है. Okay. So it has been already 1 minute. You just need to put in the values. VRMS is how much? V naught by root 2. So 20 by root 2. IRMS is how much? I naught. This is I naught. So that is 10 by root 2. What is cos phi? Phi is what? Phase of voltage is 200 pi t. Phase of current is 200 pi t plus pi by 3. What is the phase difference? Pi by 3. So here you will write cos 60. So this is 200 by 2 into 2. So that is your equal to how much? 50 watt. So correct answer will be your B. Okay, there's so many so simple questions have come actually. So now this is the question. Take your time, do it. Poll is there, you can answer there also. Read the question carefully. You will get the answer actually. It's not difficult again. You just need to know which formula to apply, and then you just need to put in the values. Okay, let's do it together now. So what is given, an alternating voltage of this value is applied to a purely resistive load of 50 ohm, then purely resistive load. It means circuit is purely resistive circuit, that is there in only resistor, and this resistor is connected to AC source. And we already know that if there is only resistor in the circuit, then phase of voltage and current will be same. It means if voltage is given as 220 sine 100 pi t, then current will be I naught, that is 220 by impedance. Only R is there, so just put in the value of R, and this sine 100 pi t. Nothing in plus because phase difference is 0, right? So this is this thing. Now, time taken for current to rise from half of the peak value to peak value. So peak value of current here, I naught is equal to how much? 22 by 5. So question is, when current is, I mean, how much time it will take for current to rise from I naught by 2 to I naught. Done है? So at t equal to 0, current start rising in the circuit, right? So पहले वो
t equal to 0 पे 0 current था, then after some time current will become I naught by 2. So if you know, let's say in t1 time current has risen from 0 to I naught by 2. ठीक है? And then starting from the t2 time that is from I mean t equal to 0 to t equal to T2, current has changed from 0 to I naught by 2. So how much time does it or did it take to rise from I naught by 2? Sorry, this is I naught itself. So how much time it will take to rise from I naught by 2 to I naught? So that is T2 minus T1. क्योंकि I naught तक जाने में T2 टाइम लगा, I naught by 2 तक जाने में T1 टाइम लगा. So how much time in going from I naught by 2 to I naught? Simply T2 minus T1. T2 is greater than T1, right? So let's calculate first T1. So simply what you need to use? You need to use this equation. So in T1 time, I has become how much? I naught by 2. So let's write I is equal to I naught by 2 and this is equal to I naught sine 100 pi t, right? So if you're going to write this now, this will get cancelled and this is half. Half is equal to sine 100 pi t. So that can be written as sine 30 degree, that is pi by 6, is equal to sine 100 pi t. Done it? So if you will compare, because sine of first angle is equal to sine of second angle, it means both angles are equal. So here let's see let's say pi by 6 is equal to 100 pi t. So pi will get cancelled. And what is the time here? So time here is 1 by 600 second. If in terms of millisecond we write, then this will become 10 by 6 millisecond. So this is T1. If we have to calculate T2, then in time T2, I has become I naught. So here I is I naught and this is equal to I naught sine 100 pi t. Done. So I naught cancel. This is 1. So sine 1 can be written as equal to sine pi by 2. And this is equal to sine 100 pi t. So similarly, here you can write pi by 2 is equal to how much? This is equal to 100 pi t, right? So time is equal to how much? Time is equal to, that is T2. This is equal to 1 by 200 second, right? So in terms of millisecond, it will become 10 by 2 millisecond. So this is equal to how much? 5 millisecond. So this T1 time is your 10 by 6 millisecond and this is your 5 millisecond. So time taken to rise from I naught by 2 to I naught kitna hoga? 5 minus 10 by 6. Okay? So this thing you can write. I mean, if you're getting confused, if you I mean, if normally from the graph also we can do, but I just want you to use the formula. इतना मैंने टाइम लिया एक्सप्लेन करने के लिए, बट एक्चुअली वहां पे काफी क्विक होगा क्योंकि एंगल्स जल्दी से पुट करोगे, टाइम निकाल लोगे. So it's not a big. So time will be how much? 3.3 millisecond आ रहा है. So this is 30 minus 20, 20 by 6 millisecond. So yes, that is equal to 3.3 millisecond. Okay, now go through this question and try doing it. Okay, poll is there, you can answer. Question is not difficult, right? Output voltage is getting asked, so you have to calculate voltage across this 7 kilo ohm resistor because this is V naught, right? So V naught has to be equal to potential drop across the 7 kilo ohm. Done it. So this has to be the thing. Check it
and let me know. Okay, I've already given 1.5 minutes. So let's do it together now. So what is the question? Let's read it first. So primary coil of transformer is connected to 220 volt AC. So VP is given. That is how much? That is 220 volt. Primary and secondary turns of the transformers are 110. So what is given? Primary turns. That is NP is equal to 100 and NS is equal to 10. P standing for primary, S standing for secondary. Secondary coil of transformer is connected to two series resistances like this. Output voltage we have to calculate. So if we know VS, if we know what is VS, that is voltage drop across this coil, then this will act as a battery, right? So if we know VS, we can calculate current in this circuit, secondary circuit, and then we can easily calculate what is the voltage drop across 7 kilo ohm. So how we can calculate VS? Simple formula है यार, सबको पता होगा. So formula is what? VP by NP, sorry, VP by VS is equal to NP by NS, right? Is equal to what? IS by IP. ठीक है? So this is the equation, right? If we use these two, then we can easily calculate VS. So VP का value क्या है? 220 by VS. NP का value क्या है? 100 and that is 10. So this will become how much? VS is your 22 volt. So at that instant, VS is how much? 22 volt. And if at that instant it is 22 volt, in this circuit, you can see 15 kilo ohm and 7 kilo ohm are in series because current will flow like this. So both are in series. Done it. So R equivalent of the circuit is how much? 22 kilo ohm. So what has to be the, I mean, what has to be the current? So current will be equal to how much? Voltage 22 divided by 22 kilo ohm, that is 10 to the power 3. So this is 1 milliampere, right? This is how much? 1 milliampere. What will be the voltage drop across it? So voltage drop will be 7 kilo ohm. That is this into 1 milliampere. That is this. So that is equal to 7 ohm. So correct answer will be your what? A. Done. So this is going to be your correct answer. Now read this question carefully. Take 1.5 minute I'm giving. Might be you can take more time to solve it. That is why. So do it and let me. Still you have more than half minute. Okay. Now let us do it together. So first let's read the question. Actually, in AC concept is not tough. Only thing is you need to follow the steps. So
A series LCR circuit connected with an AC source. AC source is given like this. Has a power factor this. यानी कि cos phi value is given. Cos phi value is how much? 1 by root 2. ठीक है? Source, if the source of EMF is changed to this, then new power factor of the circuit will be what? Initially, when voltage is like this, so initially, uh, I mean, maximum voltage value is 25 and omega value is 1000. Finally, V naught is 20 and omega value is 2000. So how power factor will depend on omega value and all? Let's see that. So initially, for first case, first we will cos phi we have to write. So ये है phi, ये क्या होता है r, and this is what? XC minus XL. And in this circuit, this is LR circuit. So LR circuit कहने का मतलब क्या है तुम्हारा? क्या जीरो होगा? XC जीरो होगा ना, ठीक है. सो यहाँ पे माइनस करने की जरूरत नहीं है, सिंपली XL लिख डालो, ठीक है. सो दिस इज योर व्हाट? XL. And this angle will be negative basically, but I have just omitted this thing because हमें ये नहीं बताना करंट लीड कर रहा है, लैग कर रहा है कितने एंगल से. ऑब्वियसली इंडक्टिव सर्किट है तो करंट क्या कर रहा होगा? लैग कर रहा होगा, ठीक है. Let's look at the calculation. So this value will be XL square plus R का square. Now what will be the cos phi? Cos phi is equal to R divided by XL का square plus R का square root under. And this is equal to how much? 1 by root 2. Do the squaring on both sides. So if you're going to do this, this is R square by XL का square plus R square is equal to 1 by 2. So if you go on to solve this, what you are getting? You are getting that R square is equal to XL ka square. That is XL is equal to R in first case, right? In second case, what is happening? I mean, how cos phi will change? So cos phi value is how much? Cos phi value is simply R by root under XL ka square plus R का square. So in second case we are changing omega and we are changing V naught. So अगर V naught चेंज कर रहे हैं तो cos phi पे कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि R XL R का टर्म है यहाँ पे. बट इफ वी आर चेंजिंग ओमेगा देन XL विल गेट चेंज, राइट? क्योंकि XL का वैल्यू क्या होता है? ओमेगा L होता है. इनिशियली ओमेगा L क्या है? R के बराबर. सो इनिशियली अगर मैं बात करूं तो इनिशियली दिस इज लाइक XL इक्वल टू ओमेगा L इक्वल टू R. एंड इनिशियली ओमेगा कितना है हमारा? 1000 है. 1000 इंटू L इज इक्वल टू R है. और फाइनली अगर आप ध्यान से देखो तो फाइनली हमारा XL क्या होगा? XL होगा ओमेगा इंटू L. ओमेगा इज हाउ मच? 2000. सो फाइनली इट इज 2000 इंटू L. And if 1000 L is equal to R, then 2000 L will be equal to how much? 2R. So finally, XL is equal to 2R. R is R itself. So cos phi finally क्या होगा? Finally cos phi क्या लिखोगे? R divided by XL का square. XL का value क्या है? 2R. So 4R का square plus R का square. So this is 1 by root under 5. So correct answer will be your what? C. Done है? चलो. Now let's do this question. Okay, चलो करो. Okay, I'm giving 1 minute. I mean, how much time has already passed? Half minute. Because you don't need to do much. You just need to put in the formula. Again, question of transformer. है ना? Right now we have discussed the formula. Okay, let's do it now. Primary side of a voltmeter is connected to this. So primary voltage is given 230 volt and turns ratio of primary to secondary, that is Vp by Vs is given as 10.
Load resistance is given. Load resistance is how much? 46 ohm. We have to calculate power consumed in it. Power consumed in this one. So I mean, this is not Vp by Vs, this is Np by N is given, right? Done it. So RL हमें निकालना है. Done it. So if we know somehow what is the value of Vp, we can easily calculate Ip, right? So let's first calculate Vp. So we already know that Vp by Vs is equal to Np by Ns, right? We know the formula. Now Vp by Vs is how much? Vp is how much? I mean, primary side of transformer, this is primary voltage actually. So primary voltage is 230. Vs we don't know. Np by Ns is 10. So Vs is equal to how much? 23. Done. And what will be the power consumed? So power consumed simply V square by R. Done. I mean, this was the primary coil and this was the secondary coil, and this is connected to a load resistance of 46 ohm. So whatever voltage is appearing across the secondary, that will fall across it. Hence, power consumed by this 46 ohm is V square by R, right? So V is how much? 23 into 23 divided by R. R is how much? 46. So this is this, and this is equal to 1.5 watt. So correct answer will be your A. Okay. Now do this question. Read the question carefully and try to understand what it is trying to say. Take your time, do it, let me know. Done it? So let's do it together now. An AC circuit undergoes electrical resonance. Electrical resonance का मतलब मैंने बताया था कि अगर सर्किट में इंडक्टर है, कैपेसिटर है और रेजिस्टेंस है, तो ये सर्किट रेजोनेंस में जा सकता है. रेजोनेंस का मतलब करंट मैक्सिमम हो, और करंट मैक्सिमम कब होता है? जब XC इक्वल टू XL होता है. डन है? क्योंकि करंट मैक्सिमम के लिए हमें क्या चाहिए था? हमें आई मीन आई का वैल्यू, आई नॉट का वैल्यू हमने क्या लिखा था? बी नॉट डिवाइडेड बाई जेड. जेड क्या था हमारा? XC माइनस XL का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर. डन है? सो सर्किट रेजोनेंस में तब जाता है जब हमारा आई मीन यहाँ पे क्वेश्चन में दिया, इट कंटेन्स आइदर अ कैपेसिटर और एन इंडक्टर. अगर सिर्फ कैपेसिटर हो तो देखो जेड का वैल्यू XC स्क्वायर प्लस R स्क्वायर हो जाएगा. इट कैन नॉट गो इनटू रेजोनेंस. रेजोनेंस में जाने के लिए XC इक्वल टू XL हम लेते हैं, राइट? We minimize the Z. So, I mean, if it contains either a capacitor or an inductor, no, it has to contain both. And in that case, XC has to be equal to XL. Done it? So, AC circuit electrical resonance में जाने के लिए you need such setup. So, first statement is wrong. Second, an AC circuit containing a pure capacitor or pure inductor consume high power due to its non-zero power factor. हमने पढ़ा है कि आई मीन अभी अभी हमने पावर का फॉर्मूला पढ़ा. सो पावर का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा? अगर ध्यान से देखो तो VRMS IRMS cos फाइव. और cos फाइव तुम्हारा क्या होता है? cos फाइव से ही तुम आ जाओ. cos फाइव क्या होता है? दैट इज योर R डिवाइडेड बाई XC माइनस XL का होल स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर. यही है ना? दिस इज cos फाइव, राइट? इन LCR सर्किट इफ यू टॉक अबाउट. नाउ अगर सर्किट के पास सिर्फ कैपेसिटर है, ओनली कैपेसिटर, देन R विल बी जीरो, XL विल बी जीरो. एंड इफ आई मीन एन AC सर्किट, एक सेकेंड रुक जाओ. दिस वाज योर फाइव, राइट? सो दिस इज योर R. या सो cos फाइव इज दिस.
डन है, ठीक है। सो इफ सॉरी, cos फाई इज इक्वल टू दिस थिंग इज राइट, राइट, सॉरी आई गॉट डिविएटेड। सो फर्स्ट केस क्या है, प्योर कैपेसिटर। सो अगर सिर्फ एक्सी हो तो आर जीरो होगा, डन है। और अगर आर जीरो होता है तो cos फाई क्या हो जाएगा, जीरो। और अगर cos फाई जीरो होता है तो हमारा पावर क्या हो जाएगा, जीरो। अगर सिर्फ इंडक्टर है तो सिर्फ इंडक्टर होगा तो अगेन एक्सी विल बी जीरो, आर विल बी जीरो, अगेन आर जीरो, डन है। सो प्योरली कैपेसिटिव सर्किट ओनली विथ एक्सी cos फाई इज जीरो, ऑल्सो cos फाई इज जीरो ओनली विथ एक्सएल, डन है। और cos फाई को नॉन जीरो होने के लिए जरूरी है कि उसके पास कुछ ना कुछ आर हो, डन। सो पावर सिर्फ कंज्यूम रेजिस्टर में होता है, कैपेसिटर कोई पावर कंज्यूम नहीं करता ओवरऑल इन वन कंप्लीट साइकिल, एंड ऑल्सो इंडक्टर डजंट कंज्यूम एनी पावर ओवरऑल इन वन साइकिल ऑफ दैट एसी वोल्टेज, ठीक है। सो नॉन जीरो पावर फैक्टर तो होता नहीं है, जीरो पावर फैक्टर हो रहा है फॉर बोथ प्योरली कैपेसिटिव एंड इंडक्टिव सर्किट। सो ये स्टेटमेंट भी क्या है, रॉन्ग है, दोनों ही रॉन्ग है, तो ऑप्शन ए होगा, ठीक है। चलो, दिस इज द वन लास्ट क्वेश्चन, लेट्स डू इट। टेक योर टाइम, रीड द क्वेश्चन केयरफुली एंड लेट मी नो। Okay, I'm launching the poll for this. You can answer over here also. Write equations, try to compare, ठीक है। सेकंड ऑप्शन तो काफी क्लियरली दिख रहा है, फर्स्ट भी आई का वैल्यू वैल्यू लिखो जो मैंने बताया था, वी नॉट बाई दैट, और कंपेयर करो फिर स्टेटमेंट के साथ, सही जा रहा है या गलत जा रहा है। Okay, let me discuss or let us do it together. When the frequency of an AC source in a series LCR circuit increases, so omega को हम vary कर रहे हैं and we are increasing it. Current in the circuit first increases, attains a maximum value and then decreases. Let's check it. So current का value हमने क्या लिखा था? हमने लिखा था V naught by I mean I naught की मैं बात कर रही हूँ, V naught by XC minus XL प्लस इसका स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर. नाउ इफ वी आर चेंजिंग ओमेगा, वी नॉट विल नॉट चेंज, आर विल नॉट चेंज, दिस थिंग इज गोइंग टू चेंज. सो एक्सी क्या होता है, वन बाई ओमेगा सी माइनस ओमेगा, एक्सएल क्या होता है, ओमेगा एल. सो इसका स्क्वायर. नाउ if you are increasing omega, we are increasing it, right? When the, yes, so if we are increasing omega, this thing will what, I mean, when the frequency of AC source in series LCR circuit increases, right? So if we are increasing omega, what will happen? This thing will decrease. Done है? So this is decreasing and this is increasing. Done है? So overall minus क्या करेगा? Decrease करेगा, क्योंकि ये term घट रहा है, ये term बढ़ रहा है. Done है? So overall this will what? Decrease. And if this overall this thing is decreasing, it means कि current is what? I naught is what? Increasing. Done है? So the current in the circuit first increases. Done है? So this thing is happening. Now there will be a moment where this is decreasing, this is increasing. There will be time when this two will become equal. And at that point, current will what? Attains a maximum value. वहां पे current का value क्या हो जाएगा? Maximum, क्योंकि XC equal to XL होगा वहां पे. So Z का value R होगा. Done है? And that is the minimum value of Z that we can attain in LCR circuit. So yes, वहां पे वो क्या हो जाएगा? मैक्सिमम, राइट. और उसके बाद अगर हम ओमेगा को इंक्रीज करते हैं तो देखो उस टाइम पे एक्सी इक्वल टू एक्सएल है. अगर हमने ओमेगा को और बढ़ा दिया तो एक्सी और घट गया और एक्सएल और बढ़ गया. सो ये टर्म हमारा क्या हो जाएगा वापस से, आई मीन
वापस से ये टर्म क्या हो जाएगा, समथिंग पॉजिटिव। और अगर ये टर्म समथिंग पॉजिटिव हो रहा है तो करंट क्या हो जाएगा, करंट डिक्रीज हो जाएगा। समझ रहे हो कैसे डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि एक्स इक्वल टू एक्सएल पे जेड का वैल्यू क्या था, आर था। सो करंट का मैक्सिमम इंक्रीमेंट इतना हो सकता है, उसके बियॉन्ड अगर तुम ओमेगा को चेंज कर रहे हो तो एक्सी माइनस एक्सएल का कुछ पॉजिटिव वैल्यू होगा। सो डेफिनेटली करंट इज गोइंग टू बी लेस देन दैट ऑफ आई मैक्स। So first statement looks correct. In a series LCR circuit, value of power factor at resonance is 1. So power factor, that is cos phi, इसका value क्या होता है, R by XC minus XL का whole square plus R square. This is power factor, right, for LCR circuit. So resonance का मतलब XC is equal to XL. So at resonance, this is R by R, this is 1. So cos phi is 1. Yes, that's also correct. So power factor is 1. That is phi is how much? 0 degree. There is no phase difference between current and voltage. So which will be the correct answer? Both statement 1 and 2 are true. So this is going to be your correct answer. Okay. So this was the all, these were the all questions that I selected for you to solve. You must have noticed questions were too easy. So all you need to know is basic of alternating current and how to apply those things. There are certain formulas that we need to remember. Basic thing है कि simple LCR circuit याद रखो. This is R, this is L, and this is C. When this is connected to AC source, this is LCR circuit connected to AC source. And in this case, impedance of the circuit is written as how? XC minus XL का whole square plus R square. Done है. Maximum current in this circuit, I naught is written as V naught by XC minus XL का square plus R का square. This is your I naught. And when I naught will be maximum, आई नॉट मैक्सिमम जब होता है तब हम बोलते हैं कि सर्किट रेजोनेंस में है। और ये कब होता है, व्हेन एक्सी माइनस एक्सएल इज इक्वल टू 0, दैट इज रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कितना आता है, 1/√LC। ठीक है। अब देखो यहाँ पे आई नॉट का वैल्यू हम सर्किट चाहे जो भी हो निकाल सकते हैं एलसीआर में, प्योरली इंडक्टिव, रेजिस्टिव, कैपेसिटिव या तीनों हो। We just have to put the values. Done है। Similarly, power consumed in any AC circuit, उसको हम क्या लिखेंगे, VRMS, IRMS, cos phi. एंड फाई का टर्म जब भी तुम्हें निकालना हो ना तो सिंपल इस ट्रायंगल को याद रखना है। ये वाला वैल्यू है एक्सी माइनस एक्सएल, ये है आर, और ये हाइपोटेन्यूज क्या है, एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एंड विच एंगल इज फाई, दिस इज फाई. So if you have to calculate tan phi, cos phi is the power factor. So from this triangle we can calculate. डन है। एंड ऑल्सो tan phi का वैल्यू, चलो मैं फाइनली एक वर्ड दे दूं यहाँ पे, tan phi को हम क्या लिखेंगे, XC माइनस XL बाई R। ठीक है। सो अगर XC ग्रेटर देन XL है, यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर XC इज ग्रेटर देन XL, देन phi विल बी व्हाट, phi विल बी पॉजिटिव। और phi पॉजिटिव का मतलब क्या है कि करंट वोल्टेज से क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। यानी कि जब सर्किट में कैपेसिटर डोमिनेट करता है, दैट इज सर्किट इज कैपेसिटिव इन नेचर, नॉट प्योरली कैपेसिटिव, लेकिन कैपेसिटर इज लीडिंग द सर्किट, देन करंट विल लीड द वोल्टेज। एंड इफ XC इज लेस देन XL, ध्यान से देखो फाई क्या आएगा, नेगेटिव। और फाई नेगेटिव का मतलब करंट क्या कर रहा है, करंट कर रहा है लैग। एंड दिस हैपेंस व्हेन इंडक्टर क्या होता है, डोमिनेट कर रहा होता है सर्किट। So then circuit will be inductive in nature. And when XC is equal to XL, then phi is equal to how much? Phi is 0. क्योंकि tan phi 0 यानी कि phi 0. So this is the case where voltage and current are in phase. Done. So these are the thing you need to remember. This is power factor. Wattless current का question recent में नहीं आया है, but again that is in your syllabus. So you need to remember कि अगर ये voltage है, इधर ये करंट है, तो करंट का जो भी वैल्यू वोल्टेज के अलोंग है वो वॉटलेस नहीं है, जो परपेंडिकुलर है करंट का कंपोनेंट वो क्या है, वॉटलेस है। सो दिस इज ऑल, this is how I'm summarizing this AC topic revision. I hope you all must have done this question, gone through it, and you must have felt it to be of some use. So thank you so much. Keep on solving more questions until your exam is there. Done it. Bye everyone. Take care of yourself. Bye bye.